कर देंगे और इसके बाद कोई भी अगर किसी को डाउट्स है तो वो बाद में भी पूछ सकते हैं और आप अगले हफ्ते कुछ प्रश्नों के साथ भी आ सकते हो। So, good evening, brothers and sisters. We are doing technology in children's ministry today. गुड इवनिंग भाई और बहनों, आज हम चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में बच्चों की सेवा में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं वो उसके बारे में सीखेंगे। So there's lots of uses for different programs online and tools, but we're finding it does change children's ministry today. आजकल Oh, we lost Blessy. Do any of you speak English? No? Sister Bumi, do you speak English? Very well? She must have lost the network, sister. Yeah, she came. Yeah. We can't hear you, Blessy. You're muted. Okay, now you can hear me. Yeah, we lost you. Yeah, okay. Well, yes. I'm sorry for that. Yeah, please, sister. I was like, can anyone translate that phrase? And it was just quiet. सॉरी, मैं थोड़ा सा गायब हो गई थी इंटरनेट नेटवर्क के वजह से और सिस्टर उधर पूछ रही थी क्या कोई ट्रांसलेट कर सकता है, तो सिस्टर देख रही थी सब कुछ शांत शांत थे सब लोग। Okay. What was I saying? Technology has changed our world, but it also has changed children's ministry. टेक्नोलॉजी ने दुनिया को तो बदल ही दिया है, पर टेक्नोलॉजी ने बच्चों की सेवा में भी बहुत सारा बदलाव लाया है। Okay, here we go. Share our screen. Can you see the screen now? Yes. Okay. So technology is useful and beneficial in many areas, and it's going to improve our ministry. टेक्नोलॉजी कई क्षेत्रों में उपयोगी और फायदेमंद है और ये हमारी सेवा में बहुत ही फायदेमंद है। So it's a tool that's going to make you better. ये एक ऐसी चीज है जिससे ये आपको और बेहतर बना देगा। So you can reduce repetitive tasks. Anything you have to do multiple times, you can set it up to do automatic. आप बहुत सारे चीजों को एक समय पे बहुत सारे चीजों को एक साथ कर सकते हो। And you can set up easy ways to send posts in WhatsApp, for example. Super easy. So you look really organized. और इस कारण से क्या हो सकता है, आप एक साथ बहुत लोगों को जैसे व्हाट्सएप के द्वारा या किसी भी तरीके से आप एक साथ लोगों को बहुत सारा मैसेज या जो भी पोस्ट है आपके वो आप भेज सकते हो। So just remember, it's a tool. These are tools that you can use to better your ministry. ये खाली एक उपकरण है, एक तकनीकी उपकरण है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो आपकी सेवा के लिए। So there are lots of tools, right? Hundreds or actually maybe thousands. But today I just want to look at 6. वैसे बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत सारे 100,000 उपकरण हैं, पर आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो खाली 6 उपकरणों के बारे में बोलने जा रही हूँ।
So we're going to look at your mobile device as a tool for children's ministries, the first one. जो सबसे पहला है वो हमारा मोबाइल है, जो कि बच्चों की सेवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Canva is the second one, and it is a design product, help you make designs. और उसके बाद एक है कैनवा। कैनवा मतलब एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा आप डिजाइनिंग कर सकते हो। Social media, so that's going to be WhatsApp, Facebook. और सोशल मीडिया है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कई सारे अलग अलग ऐसे एप्स हैं। Classroom, Google Classroom is useful for doing teacher classes in your churches if you need to go online. और गूगल क्लासरूम है, और जिसके द्वारा आप बहुत अच्छी तरह से ऑनलाइन आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। And Zoom is also good for online classes. और Zoom भी ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बहुत ही अच्छा है। And MailChimp is a service for emails. और ईमेल का अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेलचिम्प करके एक ऐप है। But it's a very large program, so it also can be used for making websites or sending your social media campaigns. ये एक बहुत बड़ा एक वो है, ऐप है। इस कारण से हो सकता है कि बहुत ज्यादा एक साथ आपको अगर मेल्स भेजने हैं तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप। So I learned something this year that I want to share with you. I'm always trying to save money. मैं हर समय मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। मेरी आदत है कि मैं हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी तरीके से रुपए को बचाने की कोशिश करती हूँ। So our ministry is funded by donations. So I'm always trying to find the free products. तो हमारे जो सेवा है वो डोनेशंस के द्वारा, मतलब लोग जो कुछ स्वयं कुछ डोनेट करते हैं उसके द्वारा हमारा चलता है। इस कारण से मैं कोशिश करती हूँ कितनी जो फ्री चीजें हैं उनको इस्तेमाल करूँ। So this year we're working on making a new website, and I learned something very valuable from Deborah. और मैंने इस बार जो हम लोग हमारा जो वेबसाइट है उसका नया वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस समय मैंने उनसे कुछ सीखा, नया सीखा। So she shared with me that any program that has several layers, like the free layer and then the expensive layer and then more expensive, these provide a better service. तो उनने मुझे सबसे पहली एक बात जो सिखाई वो ये थी कि हर जो ऐप होता है या सॉफ्टवेयर होता है, इसका एक कई सारे भाग होते हैं। एक होता है उसमें जो कि सबको फ्री में मिलता है, और एक होता है उससे बड़ा मिलता है, और एक होता है उससे भी ज्यादा फैसिलिटी के साथ आपको मिलेगा। Because they're providing the expensive service, they have staff that are always working on making that product better and servicing the clients. जो बड़े से बड़े जो इनके सर्विस होते हैं, जो वो हमें देते हैं हमारी सहायता के लिए, अच्छा से अच्छा बनाते हैं, तो इतना होता है कि उसमें और भी उनके जो स्टाफ होते हैं वो और भी नया नया चीज हमारी आसानी से किसी एक ऐप को यूज करने के लिए वो बनाते रहते हैं। So there are some products out there that are free, but there's no paid version. They're all free, and they're going to be a lot less quality. और कुछ चीजें होती हैं जो कि फ्री में आपको मिल जाती है, जो आपका एक हद तक बहुत काम आता है, और उसमें कई सारी चीजें फैसिलिटी जो होती है वो कम होती है, जो आपको पे करके मिलती है उससे कम रहती है। So for example, Canva is a product that has a free version and a paid version, and they make the free version very good because they want to win your heart so that you pay. So it's a good product. तो कैनवा एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको वो उन्हें फ्री दे रखा है,
क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि लोग आदी हो जाएं, फ्री इनका आदी हो जाए और उसके बाद वो लोग उस पेड वर्जन में आ जाएं। So you want to find products that have a paid version and a free version and use those. हाँ, और आपको इसलिए हर समय ऐसा देखना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे, कि एक उसका फ्री वर्जन भी होता है और उसका एक पे करके देने वाला वर्जन भी होता है। So also even products that are one-time fee, I've seen some that you pay $50 one time, and that's not as good as the ones that want you to pay monthly. Those are nice programs and they have a free version. और ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हर महीने आपको जिसके लिए पे करना पड़ता है, और कुछ होते हैं जो पूरे साल भर के लिए आपसे ले लेता है। तो मैंने ये देखा जो साल भर से लेता है उन सबसे सबसे अच्छा होता है जो जिसमें आपको महीने महीने पे करना होता है। Okay, ready? Here we go. Cell phones, mobile. सबसे पहला है मोबाइल। So now we don't have to go buy video cameras. Do you remember we used to have to go get a big video camera so we could film our children's ministry? हाँ, हम पहले क्या करते थे कि हमें ऐसा कोई भी बच्चों की सेवा कुछ भी करनी है तो हमें कैमरा लेके आना पड़ता था, पर अब हमें कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास मोबाइल है। Now we just have the camera on here and it's nice camera. यस, और अब बस हमें अपने ही मोबाइल का बस कैमरा ऑन करना पड़ता है और बहुत अच्छा वीडियो ले सकते हैं। And we can make a little stand or buy a little stand for the camera and you have like better video quality than we used to have even 10 years ago. और आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने स्टैंड बनाना भी सिखाया है, या तो आप स्टैंड खरीद के भी आप अपने मोबाइल को लगा सकते हो और आप बहुत अच्छा वीडियो अपने मोबाइल से कर सकते हो, जो पहले 10 साल पहले कैमराओं में खींचते थे उससे अच्छा आज के मोबाइलों में आप अच्छे वीडियो बना सकते हो। So photographs also, here's some apps that all do different editing for photos. और जो फोटोग्राफ्स के लिए आपके पास कई सारे ऐप है जिसमें आप फोटोज को एडिट कर सकते हैं, बहुत आसानी से खुद कर सकते हो आप। So remember, if you're choosing one of these apps for editing photos, remember, look for one that's expensive and it has a free option. It'll be a higher quality program. और जब भी आपके पास ऐसे एप्स भी होते हैं तो आपको उसमें देखना जिसमें आपको एक तो फ्री वर्जन भी मिलता है और एक तो उसमें पेड वर्जन जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी में मिलेगा आपको। Okay, next, Canva for design. अगला है कैनवा डिजाइनिंग के लिए। So this is all online. You go to a website online. You don't have to download to your phone or your computer, so there's no space needed. ये जो कैनवा है उसको आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये एक वेबसाइट जैसा, उसमें आपको डायरेक्टली जाना है। So right now, this presentation I do for coaching class, I made this in Canva. और आपने देखा होगा ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रही हूँ आपको कोचिंग देने के लिए, ये पूरा मैंने कैनवा में ही बनाया है। So we can make this in Mexico. I make it in Oregon in the US. I send it to Mexico and then I can send it to Blessy with a link. And then Yes. we all can connect and see the same presentation before class. और ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर है कहना चाहिए जिसको जैसे अभी ओरेगन में सिस्टर क्रिस्टी यूज कर रही है, जिसको इस्तेमाल कर रही है, वो इनके स्टाफ जो मैक्सिको में बैठे हैं वो भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो मुझे वो लिंक भेज देगी तो मैं इंडिया में बैठ के उसको मैं एडिट कर सकती हूँ, मैं जो करना उसमें कर सकते हैं, एट ए टाइम हम सब मिलके इसमें काम कर सकते हैं। But also it means that you could work on a presentation for your Sunday school at home and send it to one of your teachers and they can see it at their home. और इसका मतलब ये है कि आप अपने संडे स्कूल के लिए कोई ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो
तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो, और उसी को आप अपने किसी दूसरे टीचर को भेजना चाहते हो तो खाली लिंक भेज दोगे तो हो जाएगा। This is what the page looks like when you enter Canva. जब आप कैनवा का जो पेज है उसको जब खोलोगे तो ये ऐसा दिखेगा आपको। You can change the language with Google Chrome. और गूगल क्रोम के द्वारा आप चाहे तो अपना लैंग्वेज को बदल सकते हो। So you can make videos. आप वीडियोस बना सकते हो। This is a presentation like what I'm doing here today. और ये प्रेजेंटेशन है जो जैसा मैंने आज बना रखा है। You can make posts for Facebook or WhatsApp, like a picture. आप पोस्ट डाल सकते हो फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, किसी का भी पोस्ट डाल सकते हो आप इसके द्वारा। You can make posters for printing at your church. आप पोस्टर्स बना सकते हो प्रिंटिंग करने के लिए आपके चर्च के इस्तेमाल के लिए। So many tools available here. और आप देखोगे इधर ऐसे बहुत सारे उपकरण, बहुत आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण इधर हैं। Okay, so here, also, I think this was Chrome translated into Hindi. ये क्रोम ने ट्रांसलेट किया है हिंदी में। The best thing about this is they offer designs already made. You can get templates. वो पहले से ही, इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि पहले से ही इनके पास पूरे डिजाइन्स बने हुए हैं, तो वो आपको दिखा देगा कि आपके लिए आपको कौन सा डिजाइन उसमें से चुनना है। I remember when I was first children's pastor's assistant, maybe 20 years ago. मैं याद कर रही हूँ जो मैं 20 साल पहले जब मैं एक चिल्ड्रन पास्टर की, मैं खाली एक सहायक थी, असिस्टेंट थी। One of my jobs was to design all the flyers or advertisements for the church for the children's ministry programs. तो मेरा काम उस समय यही था कि जितना चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में जितना जो प्रोग्राम हो रहा है उन सब का जो फ्लायर्स या जो उसका एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी ऐसा जो बनाना होता है ना, पोस्टर्स वगैरह, वो सब बनाने का काम मेरा ही था। So I had to learn Microsoft Publisher and Adobe InDesign and learn how to design a poster from a blank page to a beautiful poster. तो उस समय कई सारे जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, एडोबी जैसे है, और कई सारे ऐसे प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सबको मुझे सीखना पड़ा ताकि एक खाली पेज से एक बहुत अच्छा वीडियो या डिजाइन मुझे बनाना पड़ता था। And now they give you these designs already made and you can just put your text in there. बट अब देखिए कितने आसानी से उनने इतने सारे डिजाइन दे रखे हैं, बस हमें जो मैटर डालना है वो उसमें हमें वो मैटर डालना काफी है। Okay, so for example, this one, you look at it, you say, I don't need a pineapple and I don't need a bicycle. आप इसको देख के बोल सकते हो मुझे तो ये जो पाइनएप्पल है वो नहीं चाहिए, और वो जो साइकिल वाली जो फोटो है वो भी मुझे नहीं चाहिए। You can actually put pictures from children in your children's ministry and you just pull that picture over and it replaces the pineapple picture with your picture. आप चाहे तो आपके चर्च के बच्चों का अगर आप फोटो डालना चाहते हो तो भी आपको क्या करना है, उस फोटो को लेके जहां वो पाइनएप्पल का जो फोटो रखा है उसके ऊपर लाके आप चिपका सकते हो। So any design you can say, I like the idea of that white box in the middle with the text. So you could put in the text there, Happy Easter. तो आप चाहते हो कि आपको वो बीच का जो स्क्वायर के अंदर जो व्हाइट पे जो डिजाइन लिखा हुआ है आपको अच्छा लगा, पर आप उसको हटा के लिखना चाहते हो हैप्पी ईस्टर, तो आप उसको हैप्पी ईस्टर उधर कर सकते हो। So just remember, you can change the photos, but then all that design is done for you.
तो पर सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आप जितना उसमें जो टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो, और पर ऑलरेडी पूरा का पूरा डिजाइन बना हुआ है आपके लिए। So I think Chrome translated this into Hindi as well for Brother George. मुझे लगता है क्रोम ने जब ब्रदर जॉर्ज इसको डिजाइन कर रहे थे तो ये पेज उनके लिए ट्रांसलेट किया हुआ है। He just took a design that was already done and then put the text in that he wants to, and so you can write anything you want. Okay. Means this is nothing readable. Yeah, so Chrome, and maybe it's a bad translation. Yeah, no, there is no translation at all. It is means no meaningful word. There is not even a single word that is coming in Hindi. Just the font is there. The point is there, yeah. Yeah. Okay, yeah, this is clean translation. Yes, okay. Yes. Okay, before we go on to social media, I want to show you. Okay, so here, this is Canva now, and I have, this is so these are some designs right here available. देखिए कैनवा में इतने सारे अलग अलग सुंदर सुंदर डिजाइन ऑलरेडी दे रखा है। So right here you can see like this one's free, and this one requires the paid subscription, and then these ones down here that have a little dollar sign, you have to buy them. Okay, इसमें आप देखोगे डिफरेंट फोटोज है, कुछ तो बिल्कुल फ्री दिखा रहा है पर कुछ में नीचे लिखा हुआ है पेड करके, मतलब वो पेड हमें उस वर्जन के लिए पे करना पड़ेगा, और कुछ में रुपए भी दिखा रहा है कि वो कितने रुपए का है। So this one has no dollar sign there, so it's free. आप इधर देख सकते हो ये वाले में कोई और वो साइन नहीं लगा हुआ, जो डॉलर का या रुपीस का कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये फ्री है। It says, "Are you ready? Welcome back, students." इसमें लिखा हुआ है क्या आप तैयार हो बच्चे, आप लोगों का स्वागत है। And then you can just say, yeah, I want to keep this one. And so maybe I'm going to say, welcome back to church. Yeah. मैंने उस वेलकम बैक स्टूडेंट को हटा के मैंने वेलकम बैक टू चर्च कर दिया, चर्च में वापस आने के लिए उनका स्वागत किया है। And then you can just put your logos on there. So I'm going to come over here and go, okay, I'm going to put circus. ये देखिए वो दूसरा फोटो हटा के इधर हमने अपना सर्कस का वो डाल दिया। And you can make, and then you can just say, okay, I'm done. ठीक है, बस अब मुझे लगता है कि मेरा हो गया, तो बस ठीक है, हो गया। So it can be pretty easy. आप देख सकते हो कितना आसान है, पूरा दे रखा है, हमें बस अपना जो टेक्स्ट या फोटो जो डालना है वही करना है। So like up here at templates, you can see social media, all these different options. आप इधर देखेंगे एक ऐसा टेम्पलेट है, एक जगह है जहाँ पे जितने हमारे सोशल मीडिया के जो दूसरे ऑप्शंस हैं उसको दिखाया गया है। Also over here with education, this is kind of fun to have lesson plans. हाँ, इधर आप देख सकते हो कि पढ़ाई से शिक्षा से रिलेटेड है, तो उधर अलग-अलग उन्हें उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। So this is for public school, right? But we can change the questions for church. ये पब्लिक स्कूल्स के लिए है जैसे, पर हम इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं उसको अपने चर्च के लिए आसानी से बदल सकते हैं। So this one I can see is free, this one's free. So I can just click on this and then I can change these to be the questions for my class. इसमें से मैंने देखा कुछ मुझे फ्री दिखा, तो मैंने फ्री वाला ले लिया, और उसमें से अब मैं अपने हिसाब से मैं इन प्रश्नों को बदल सकती हूँ। So like champions lesson 6. जैसे मैं इधर लिख रही हूँ चैंपियंस पार्ट
6. What did you learn? आपने क्या सीखा? And now you print this, you can bring it, and all of a sudden you look so professional. अब देखिए, आप इसको चाहे तो प्रिंट कर सकते हो और अगले संडे जब आप अपने बच्चों के सामने जाएंगे तो बच्चे सोचेंगे क्या बात है, किसने डिजाइन किया है, बड़े प्रोफेशनल तरीके से किया है. It looks like you have a children's pastor's assistant who makes all these designs for you. सब सोचेंगे कि कोई चिल्ड्रन पास्टर का असिस्टेंट है जो कि ये सब काम करके दे रहा है उनको. Okay, now let's talk about social media. अब हम सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं इधर. Okay, for social media, I recommend you always use what your people are using. सोशल मीडिया के लिए मैं हर समय यही कहती हूँ, आपको देखना है कि आपके चारों ओर मतलब ज्यादा लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं. So if everyone is in Facebook, it doesn't work to say, come on, let's all go over to Instagram. You have to do what everyone in your church is using. या आपके चर्च में आपको ये देखना पड़ेगा कि लोग क्या ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर वो ऑलरेडी फेसबुक यूज कर रहे हैं तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है चलो 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 सबके सब इंस्टाग्राम में चलते हैं, नया शुरू करते हैं. नहीं, आपको पहले स्टडी करना है कि आपके चर्च में कौन से मीडिया, सोशल मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है. So that's been my struggle too over the years. In the US, everyone's using Instagram, and in Mexico, they're all using WhatsApp. वही है मेरी सबसे ज्यादा जो मेरे लिए कई बार मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि हमारे यूएस में सबके सब इंस्टाग्राम को यूज करते हैं और मैक्सिको में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप को यूज करते हैं. So I have to change and use what the people are using, or they won't see the posts. इसलिए हमें ज्यादा ये देखना पड़ेगा कि आपके चर्च के ज्यादा से ज्यादा बच्चे किस चीज को या जो परिवार वाले हैं वो कौन सा सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं वो लोग. Okay, so with WhatsApp, obviously we can make audio messages. We could read a Bible verse. अब व्हाट्सएप के द्वारा आप बहुत आसानी से ऑडियो मैसेजेस बना सकते हो और वीडियो कॉल्स कर सकते हो. So video support, that's like where you go find other videos that would support your class. So you can find a video that someone else made that's a Bible story or a verse or a song, and they can help your class. वीडियो सपोर्ट का मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हो सकता है और किसी ने कोई अच्छा सा वीडियो बनाया, उसमें एक्शन सॉन्ग हो सकता है, उसमें स्टोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वो आप लेके आके बच्चों को दिखा के सिखा सकते हो. So I want to mention also WhatsApp Business. और मैं व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में भी बोलना चाहूंगी. Can I ask, are all of you using WhatsApp Business now, or are you in regular WhatsApp? मैं ये जानना चाहती हूँ आप में से आप लोग सब की सब व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हो या रेगुलर व्हाट्सएप कर रहे हो, कौन सा व्हाट्सएप यूज कर रहे हो. आई एम स्टिल इन व्हाट्सएप ओनली, नॉट द व्हाट्सएप बिजनेस. मैं अभी व्हाट्सएप में ही हूँ. हाँ जी ब्रदर. यस, मैं भी नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक दूसरा नंबर है मेरा बिजनेस व्हाट्सएप से मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने क्लोज कर दिया. मेरा जो कि यूट्यूब चैनल का है ना, मेरा पर्सनल चैनल है, लिंक है, इसलिए बिजनेस वाला है वो मेरा यूट्यूब से कनेक्टेड. He has two numbers. One is simple WhatsApp, and that is what he is using regularly. And he has a small channel, YouTube channel, that is that he uses for this WhatsApp business. Oh, okay. So you don't have to do WhatsApp Business. It's okay. It's regular. Yeah. WhatsApp is very good. Yeah, and Pastor Joel is also using simple WhatsApp. So He that's message now.
I recently switched to WhatsApp Business, but I haven't got it all set up yet. मैंने अभी कुछ समय पहले ही व्हाट्सएप बिजनेस में मैंने अपने आप को ट्रांसफर किया, बट अभी तक मेरा पूरा नहीं हुआ कि मुझे क्या क्या उसमें करना है. So basically it gives you the option for I think if I go to my oh, I'm sorry, mine's in Spanish. मैं आपको दिखाना चाह रही थी, पर एकदम से ध्यान आया कि मेरे इसमें पूरा स्पेनिश में डाला हुआ है, तो आपको तो समझ ही नहीं आएगा. So you write a little bit more about your ministry, so you can have the address of your ministry, you can have events tagged for your ministry, and you can have your website tagged. आप इसके द्वारा, बिजनेस के द्वारा आप अपने वेबसाइट को इसमें इसके साथ जोड़ सकते हो, या आप अपना और ज्यादा चर्च का एड्रेस और जो डिस्क्रिप्शन है ज्यादा से ज्यादा उसमें दे सकते हो. आप लिंक कर सकते हो कुछ चीजों को, तो वो सब ज्यादा फैसिलिटी है बिजनेस में. And WhatsApp Business also offers a catalog, so you can upload a catalog. और इसके अंदर इवन आप कोई कैटलॉग है आपका, जो मतलब कुछ भी एक चीज का ज्यादा जानकारी का कुछ भी आपके पास है, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हो. So for example, these are all just optional tools, okay? Just options. ये सब खाली कुछ कुछ एक आपको मैं अलग अलग ऑप्शंस दे रही हूँ, मतलब ये या वो कुछ भी आप कर सकते हो. So for example, Brother Johnny, you could say, I do a VBS, if brothers and sisters, if you want a VBS, and you could upload a small presentation that you make in Canva talking about how you'll do the VBS, and you can put it on your WhatsApp Business. जैसे कि अभी आज जॉनी ब्रदर ने बताया कि वो कुछ 4-5 पास्टर से और बात कर रहे हैं वीबीएस के लिए, और वो लोग मिलके करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो जॉनी ब्रदर, जैसे कि आपने एक छोटा सा कैनवा में वीडियो बनाया और उसको आप इसके इसमें प्रोडक्शन ये जो है इसमें व्हाट्सएप का बिजनेस का जो है उसमें आप डाल सकते हो उस वीडियो को. So it's just extra options if you want to promote and have it available easy in your WhatsApp. अगर इसमें कुछ और नए नए आपको ऑप्शंस दिखाता है जब आप बिजनेस वाला ले लेते हो, जो कि आपका जो व्हाट्सएप है उसको और अच्छा बना देता है और आसान बना देता है. So also Facebook is used a lot in India, I think, right? या वेरी नाइसली. और फेसबुक बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंडिया में भी. सिस्टर पूछ रही है क्या फेसबुक कैसा है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. यस. Yeah. So you can have a group, you can make a group of your Sunday school class, and they can have a private group in Facebook, and then you guys can talk back and forth. आप लोग फेसबुक में भी एक अपना ग्रुप बना सकते हो आपके संडे स्कूल के लिए, और उसमें आप इधर उधर बात वगैरह क्लियरली सबके साथ कर सकते हो. You can also tell your friends, hey, I'm doing a VBS, like Brother Johnny could say, I'm doing a VBS on Saturday. तो उसमें आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं शनिवार के दिन वीबीएस करने जा रहा हूँ, जो जो अपडेट्स है आप दे सकते हो. And then on Saturday, you can go live with a little video where you say, hey, brothers and sisters, we're live at this VBS, and you're showing kids, and it will help other. Next thing you know, you'll get 5 more pastors that want it. और आप उसको फेसबुक में दिखा सकते हो, देखिए मेरा जो वीबीएस है वो शुरू हो गया है. और ऐसे जब आप अपडेट्स अपने फेसबुक पे वगैरह डालते रहोगे तो होगा क्या, आप और भी 4-5 पास्टर्स वो देखेंगे और वो कहेंगे अरे मेरे इधर भी करना है. So also labels, you can also, if you're trying to thank someone, you can put that label in with their name and they'll see it. You guys probably all know all these pieces to Facebook, right?
आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हो तो भी आप एक कोई अच्छा सा ऐसा लेबल बना के आप उसको डाल सकते हो। मैं जानती हूँ आप सब इन सब में वैसे ही बहुत माहिर हो, करते भी होंगे। Also, there's paid advertising where you can make a payment for it to target a certain demographic. और उसके बाद एक होता है कि जो रुपए दे के हम एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, जहाँ पे हमें हल्का सा रुपए देना पड़ता है। Has any of you used the paid advertising on Facebook? क्या आप में से किसी ने वो जो पेड एडवर्टाइजमेंट है, जो रुपए दे के जो एडवर्टाइजमेंट करना होता है, उसको इस्तेमाल किया है क्या फेसबुक में? I have not. नहीं नहीं, ऑप्शन आता है ऐसा। हालांकि हमारा फेसबुक पे हमारा संडे स्कूल मिनिस्ट्री का चैनल है, जिसपे कि एक वो ऑप्शन आता है कि आप कितने लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन अभी उसको हमने भेजा नहीं है। हमारे फेसबुक पे हमारे मित्रों ने लाइक किया है पेज को, बस उतने लोगों तक सीमित। अच्छा अच्छा अच्छा। Yeah, there's an option he has seen in the Facebook, but he has never used it. He has a Facebook page for his Sunday school even. Nice. Yeah, I have never tried the advertisement, but Vero has done it for our ministry a couple of times. So we have done it, and it has been very, very good for Latin America. मैंने खुद से तो कभी नहीं किया है, पर हमारी एक सिस्टर है जिनका नाम है वेरू, और उनने हमें सहायता जरूर की है इस तरीके से। Yeah, so like when we're promoting a teacher training event, when we use Facebook for Latin America, our registrations double when we buy a small advertisement. जब हम छोटा सा एक पेड एडवर्टाइजमेंट जब कर देते हैं, कई बार हमने देखा है कि हमारे बाहर पूरा रजिस्ट्रेशन दुगुना हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। Because it's promoting to the people that already like you, so it's only promoting to like Christians who are already interested in children's ministry. So it's a targeted ad. हाँ, तो क्योंकि वो ऐसे जगह पे ज्यादा प्रमोट करता है, जैसे कि अगर क्रिश्चियंस है जहाँ बच्चों की सेवा है, तो उनको पता होता है वो उस जगह में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करता रहता है, तो इससे हमें ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है। Okay, I'm seeing now that I'm going too slow. There's so much information. मुझे लगता है मैं बहुत धीरे चल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो अभी भी मुझे आपको देनी है। So Instagram, I'll have to go faster. 15 minutes maximum videos, same kind of thing, posts very similar to WhatsApp and Facebook. इंस्टाग्राम है, इसमें अधिकतम 15 मिनट के वीडियो हम बना सकते हैं, कहानियां डाल सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो, लेबल्स लगा सकते हो, और तस्वीरें बना सकते हो, और इसको लाइव भी चला सकते हो आप। And also YouTube. It's nice to have a channel for your ministry. If you want to promote it, you can, there's lots of things where you can upload videos. और अगर आप अपने YouTube बना सकते हो आपके बच्चों की सेवा के लिए भी, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत सारा वीडियोस बना के उसको अपलोड कर सकते हो। You can record your Zoom meeting classroom and put it up like we are doing. You can also do it for your church. और जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, जूम मीटिंग का क्लासरूम बना सकते हो और उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, और उसको चाहे तो आप यूट्यूब में डाल सकते हो, जैसे अभी हम कर रहे हैं। Okay, I'm running out of time. I have left, what I wanted to show is Classroom, Google Classroom, and Zoom, and MailChimp. Which one do we want to look at? अभी मुझे ये 3 चीज है जो आप लोगों को सिखानी है, पर हमारे पास अभी समय बहुत कम ही है, तो कौन सा आप सीखना चाहोगे? नहीं यूज मैं तो सीखना चाहूंगा कि ये जो है मेल चिप करके ना, नहीं
हाँ मेलचिम्प है वो नहीं, नई हम एक मेल ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ये नहीं, नहीं सॉरी, नो ये ज्यादातर मेल यूज जो करते हैं उन लोगों हाँ के लिए ज्यादा रहेगा। हाँ तो गूगल क्लासरूम के बारे में ज्यादा सही रहेगा। Google Classroom. Sister, he would like to learn more about Google Classroom because MailChimp is for mails, but they don't use so much mail. So Okay. So for MailChimp, yes, it's about mailing, but also just so you know, you can also there make a website. And uh, you can also do, well, Pastor Joel is asking for Joel, MailChimp. Maybe I'll see if I can do MailChimp. some of both. Okay. Okay, so for MailChimp, there is, it looks like this. MailChimp इस तरीके से दिखेगा आपको MailChimp. For mails, they're blocks like this, so you just pull, you can pull a block over. तो ये ऐसा दिखेगा आपको जैसे मेल्स आप सामने देख रहे हैं और ऐसा टेक्स्ट आ जाएगा. You can also make posts for Instagram or Facebook or WhatsApp here. आप इधर से बहुत आसानी से इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के लिए पोस्ट बना सकते हो. And also they have, you can make websites. और आप इसके द्वारा इवन वेबसाइट्स भी बहुत आसानी से बना सकते हो. So with a website on the free option, you can't have your own hosting name at the top. आप जब ये वेबसाइट बनाना हो तो आप अपना जो नाम है होस्टिंग जो नाम होता है वो ऊपर सबसे ऊपर डाल सकते हो. So for example, our website is childrenareimportant.com. So we buy that hosting and then we have a company that hosts our website. तो जैसे आप देखोगे हमारा चिल्ड्रन आर इम्पोर्टेंट जो नाम है वो हमने खरीदा हुआ है ताकि हमें पूरा का पूरा वैसा मिल जाए. So if you want to make a website in MailChimp, if you want to use the free option, your website name is going to be like MailChimp/VBS. So there, it'll be their name. हाँ जैसे हमने तो खरीदा हुआ ऑप्शन था इसलिए हमें पूरी तरीके से childrenareimportant.com करके मिल गया. पर आप अगर फ्री वाला वर्जन भी होता है उसको यूज कर सकते हो और उसमें फिर आपको थोड़ा सा ऐसा मिलेगा MailChimp/VBS या स्लैश और उधर आपका नाम मतलब थोड़ा सा लंबा नाम मिल जाएगा आपको. But if you want to get the paid version of MailChimp, then you can have your name at the top. पर अगर आप रुपए देके खरीद के आप अगर अपना वेबसाइट बनाना चाहोगे तो आपको पूरा का पूरा जैसा आपको चाहिए वैसा मिल जाएगा. Okay, now let's go to Classroom. अब हम क्लासरूम को देखते हैं. Okay, so Classroom is from Google and it is free. और क्लासरूम जो है गूगल की तरफ से है और ये बिल्कुल फ्री होता है. So it's a virtual classroom that you can have with homework assignments, teachers, grading. और ये एक वर्चुअल क्लासरूम है मतलब जो आप ऑनलाइन जिसको देखते हो वो है और उसमें आप टीचर्स के लिए असाइनमेंट्स हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, ऐसे बहुत अलग ही तरीके से सब कुछ अवेलेबल है. So it has, let's see, the students can submit homework. They can look at stuff left by the teacher. Sorry, go ahead. Yeah, इसमें विद्यार्थी जो है गृह कार्य को सबमिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, शिक्षक द्वारा छोड़ी गई समीक्षा सामग्री को देख सकते हैं. So the teachers can send a code. Once you open a class, you get a code for your class. आप जब उसको क्लासरूम को खोलते हो तो आपके क्लासरूम के लिए कोड मिलता है तो वो आपको इस्तेमाल करना होगा. And then you create an assignment and then it goes to all your students there. आप कोई एक असाइनमेंट उसमें जब डाल देते हैं तो वो सब जितने आपके स्टूडेंट्स हैं उन सबके पास जाएगा.
You can invite other people to be teachers, and then that other teacher you invited can see all the students and their homework. और आप कुछ दूसरे टीचर्स को भी उसमें आप बुला सकते हो, और ताकि वो टीचर्स सब स्टूडेंट्स का जो भी असाइनमेंट्स है वो सब देख सकते हैं. Oh, that was only one page. Okay, let me think. For classroom, I think maybe I can show you. Well, you've seen our classroom, I think, right? Yes. आप लोग ने शायद हमारा क्लासरूम तो आपने ऑलरेडी देख रखा है. Yes, this one. So, for your students to be able to go and attend, they'll need a Google account. तो आपके स्टूडेंट्स को अगर उसमें जाना है तो उनको एक गूगल का अकाउंट तो चाहिए ही होगा. So these are classes that I've created. ये सब क्लासेस है जो मैंने बनाया है, मैंने शुरू किया है. This is our group today. आज ये हमारा आज का ग्रुप है. And when you want to join another class, then you ask you for what is the code. और जब आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले वो कोड को मांगता है. I think one of the best things about Classroom is that it works on your mobile and your computer. इसमें जो अच्छी बात ये है कि आपके मोबाइल में और कंप्यूटर में दोनों में ये काम आएगा. It's very quality program with a big company, Google. और गूगल कंपनी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्वालिटी वाला एक प्रोग्राम है. And also it is always free. और ये बिल्कुल ही फ्री है. So like Canva is a great big design program, but they're always trying to sell you new designs. और कैनवा जैसे आपको मैंने बताया कि पूरा फ्री तो है, पर वो कोशिश करता है कि जो अच्छे अच्छे नए नए डिजाइन होता है वो उसको रुपए में बेचता है. And Google Classroom, they're not trying to sell you anything. गूगल क्लासरूम में आपको कुछ भी बेचा नहीं जाएगा, सब कुछ फ्री होगा, मुफ्त में मिलेगा. I think probably the best use that I see for children's pastors and teachers to use Google Classroom is if we need to go back online for online church. अगर आप कभी जैसे ऑनलाइन चर्च या कुछ भी आप कराना चाहते हो, जो गूगल क्लासरूम है ये बहुत ही अच्छा एक टूल है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से उसके द्वारा आप व्यवस्थित ढंग से एक संडे स्कूल को चला सकते हो. So if your senior pastor wants to have church in the building and the children are coming to the building, you don't need something like Classroom. हाँ, अगर आपकी चर्च में, अगर आपके पास्टर चाहते हैं कि आप लोग चर्च में आके आराधना करिए, बच्चे सब उधर आए, तो आपको कोई गूगल क्लासरूम की जरूरत नहीं पड़ेगी. So you're going to go and they're going to want to color a coloring page and do action songs in the church building. क्योंकि उधर तो वो चर्च बिल्डिंग के अंदर सब आके आराधना करना चाहेंगे, कलरिंग पेपर करना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे. So for example, WhatsApp tool works for both online church and when they're going physically to the church building, because you can send a reminder, hey, don't forget it's Easter Sunday, I'll see you on Sunday, and you can use that tool for both online and in church, in present physical church. और जो WhatsApp है वो चाहे आप ऑनलाइन चर्च करो या जो अपना चर्च बिल्डिंग के अंदर जो चर्च लगे, दोनों में काम आता है, क्योंकि आप उनको बीच बीच में याद दिला सकते हैं कि इस संडे ईस्टर संडे है, या ऐसे जो भी बातें हैं ना, आप WhatsApp के द्वारा आसानी से उनको कभी भी बता सकते हो. Same with Canva for design that you can use to promote your upcoming VBS online or your upcoming VBS in the building. और कैनवा के द्वारा भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो रहा हो
या फिर आपके चर्च के अंदर हो रहा हो तो आपका जो भी अपडेट्स है, वीबीएस होने वाला है, जो कुछ है, तो आप उसका कैनवा के द्वारा बना सकते हो। And Google Classroom is made more for online systematic classes. और जो गूगल क्लासरूम है वो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन के लिए बनाया गया है। आप ऑनलाइन कुछ कराना चाहते हो तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको एक क्लासरूम मिलेगा, वो गूगल क्लासरूम होगा। So I think right now a lot of churches are open and they are having physical meetings, but sometimes they say, oh, we're closed. So it's kind of mostly open, sometimes closed, correct? या तो अभी तो मैक्सिमम चर्चेस क्या हो गया, वापस आ गए हैं और अपने ही आराधनालय में संडे स्कूल को चला रहे हैं। पर जैसे क्या पता आगे भी कोई ऐसी बात आ जाए जहाँ पे आपको ऑनलाइन संडे स्कूल चलाना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। So maybe it's easier to use Zoom or Google Meet on video and just say, oh, we have to close this Sunday, we'll have class in Zoom. और एकदम से जैसे अगर हो सकता है कि कोई संडे ये हो जाए कि आपको आज संडे चला नहीं सकते हो चर्च में, तो आप एकदम से कभी भी जूम में चला सकते हो या गूगल मीट को यूज कर सकते हो। Also, Zoom is another program that has a free version. As long as you're under 40 minutes, you don't have to pay, and it's a very nice program. और वैसे ही एक और प्रोग्राम है जिसमें आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है, मुफ्त में है और वो भी बहुत ही अच्छा एक वो है, प्रोग्राम है। व्हाट इज इट्स नेम? Zoom? यू आर सेइंग अबाउट जूम? Zoom. या सो ये जूम के बारे में बात किया था। Okay, so I think maybe I just want to finish this class by reminding you that technology is just a tool to make you better. मैं इस क्लास को अभी मैं खत्म करना चाहूंगी ताकि मैं आपको ये बताते हुए, उत्साहित करते हुए कहना चाहूंगी कि जो टेक्नोलॉजी है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके मिनिस्ट्री को करने में आपकी सहायता करेगी। So you are still the pastor responsible to love the people. क्योंकि आप अभी भी वो पास्टर है जिसके ऊपर उत्तरदायित्व है कि वो लोगों को प्यार करे और प्यार से सिखाए। But now when you say, I love you, don't forget I want to see you tomorrow. जब हम ये बोलते हैं कि मैं आप सबसे प्यार प्रेम करता हूँ और कल मिलना जरूर ना भूले। You can also now send them posts. You will have a lot of tools to make how you pastor better. और अब तो आपके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से अपने आप को और ऊंचे स्तर में ले जा सकते हो। And also, I think to close, I'd like to remind you, you can also use the young people in your church to help you with the technology. और अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तो आपके चर्च के जो जवान लोग हैं, आप उनका जरूर इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे टेक्नोलॉजी से जो चीजों को इस्तेमाल करने के लिए। You don't have to learn everything. आपको हर चीज सीखने की जरूरत नहीं है। We've used Facebook target ads, but I don't know how to do it. Vero did it for us. क्योंकि जैसे फेसबुक में वो जो पहले बताया था पेड एड्स का जो बात, एक्चुअली वो मैं नहीं करना जानती हूँ, पर एक दूसरी बहन है जिनका नाम वेरू है, वो करना जानती है ये सब। So use the young people to help you in the children's ministry and don't try to learn all the programs. खुद से सब कुछ सीखने की बहुत ज्यादा कोशिश ना करें, परंतु जवानों को आप तैयार करें जो आपकी मदद करें। Okay, we finished our time. It's hard to cover technology in 1 hour. और 1 घंटे हो गए, टेक्नोलॉजी को मैं अभी भी पूरा खत्म नहीं कर पाई हूँ और क्योंकि हमारा समय तो खत्म हो गया अभी।
So if you have to go, we understand the class is over. और अगर आप जाना चाहते हो तो आज का क्लास जो है वो खत्म हो गया है और हम आपको समझ सकते हैं. But if there's any questions, I'm happy to try to answer. और अगर आपके पास कोई प्रश्न है इस समय तो मैं हर समय खुश रहूंगी आपको उत्तर देने में. आप अभी पूछ Yes. सकते हैं. Brother Jenny? दरअसल में मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा एक क्वेश्चन है लेकिन उसको मैं ग्रुप में डालूंगा क्योंकि अभी बहुत तेज इधर आंधी आ गई है और मुझे ओहो. क्लास को छोड़ के जाना होगा, है ना. काफी तेज ओहो. आंधी है तो कुछ मुझे सामान है ओहो. घर से बाहर से अंदर रखना है, तो इसलिए मैं No क्षमा चाहता हूँ. problem. लेकिन क्वेश्चन है लेकिन उसको ग्रुप में डाल. Okay, no problem, no problem. Sister Christy, they are having a big storm there, so he need to quit now because he need to go outside and pick something. So he is leaving, but he has a question. He said he will put in the group. So Okay. there you can help him in answering. Okay, thank you, Brother Jenny. Johnny brother, okay. Okay, thank you so much. I am so very blessed for technology teaching. Well, sister, he's Okay, saying bye. thanks to you for the blessed class. Thank you. Okay. Pastor Joel was asking something. It was Pastor Joel. Yeah, I saw in the message, he said Canva in Chrome, but I'm not sure what the question is. Mm-hmm.